what's up? I hope you guys are doing great at your place and now involving yourself in some or other the creative things in your life which is giving you another motivation or finding your real purpose or finding or introspecting yourself a bit more. And in lieu of it, today's video which I prepared for is about codependency in the relationship. I hope it will help you too to introspect yourself a little further. And if it does, if you resonate with this video, देन ट्राई टू इम्प्रूव. मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि हर इशू के साथ मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दूँ सो दैट यू गाइस कैन इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड ऑफ कोर्स अगर खुद से नहीं हो पाए सो माय हाईली रिकमेंडेशन इज़ to always consult someone who is professional in this so that you can get the help and can come out of it. There is no problem in this world जिसका solution नहीं है. Just like you have to little open up with it and you have to accept that this is a problem with you and you can come out of it easily or with some little efforts. So on this note, let's start the video about codependency, its symptoms and how to overcome those. ओके सो पहले मैं बताती हूँ व्हाट इज़ कोडिपेंडेंसी. अर्लियर जब ये वर्ड डिवाइस हुआ था I guess in 90s, 100 something. I'm really not sure, so I'm not gonna quote the year. But जब ये term device हुई थी, it was more or less related to the families who has a substance abuse issues, drugs related, alcohol related, no domestic violence. उस टाइम ये टर्म कोडिपेंडेंसी यूज़ किया गया था फॉर दोज फैमिलीज जिसमें एक पार्टनर इज़ अब्यूजिव टू द अदर पार्टनर और वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ नो फॉर द मनी, फॉर द शेल्टर, फॉर द फूड, इन चीज़ों की वजह से उस रिलेशनशिप में है. अदरवाइज देयर इज़ नो लव एंड नो faith and support for each other. But then later on, as the science progressed, as the psychology science, cognitive science progressed, it has been proven now that codependency does not restrict only to the abuses, the physical abuses or the substance abuses. It is much more than that. और वो ही कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी सो दैट यू कैन नो दैट आइदर आर यू अ को डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर और योर पार्टनर इज़ को डिपेंडेंट ऑन यू. को डिपेंडेंसी इज़ अबाउट साइकोलॉजिकली बोलें तो इज़ वन ऑफ द हार्मफुल वेज व्हेन यू डिपेंड ऑन योर पार्टनर सो मच और यू रिलाई ऑन योर पार्टनर सो मच दैट you start doubting your own self, that your needs, your wants, your desires are nothing before your partner. And in such relationship, actually it's always a one-sided relationship. The other person acts like an enabler. Enabler अगर psychologically term में बोलें तो it's the one जिसको पता है that you are being codependent, बट वो आपके उस हैबिट या उस बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करने की बजाय ही इज़ यूजिंग इट फॉर इट्स ओन गुड, फॉर इट्स ओन एडवांटेजेस, बिकॉज शायद उसको वो अच्छा लग रहा है दैट यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर हिम, you are doing all those sacrifices for him and he is taking pride in that. So in every relationship of two people there's always a codependent and there will always be an enabler. फ्यू ऑफ द सिम्टम्स जो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स के होते हैं उनमें से कुछ आई विल टेल यू राइट हियर सो दैट यू कैन चेक विद इन योर सेल्फ अगर आप उसे रेजोनेट कर रहे हैं या नहीं. द वेरी फर्स्ट इज़ द लो सेल्फ इस्टीम. इन दिस यू जनरली फील दैट नो वॉट एवर यू आर इज़ ऑफ नो यूज़, नो वर्थ, you are not good enough. आप you got lucky to have a partner like him, but he isn't that much lucky. जो भी है आप ही का है and you have to preserve it, conserve it, no, by doing everything good and only good to your partner. अगर ऐसी थॉट अगर आपके मन में अक्सर आती है, आई एम नॉट सेइंग एक या दो बार आए तो आप को डिपेंडेंट हैं और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, बट इफ़ इट कम्स ऑफन
So that means yes, there is something which you have to think upon it. The second one is always ask for the validation. It is like even if you dress up, even if you make a very tiniest decision of your life, you seek validation from your partner, because आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि if he says no or she says no, so you might offend him or her. So that is not gonna good. That will not lead to the successful relationship, or that may ruin your relationship or any of such thought. But आपको लगता है कि उनका अप्रूवल आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. This is the second very important symptom. Every time if you seek validation from your partner, that is a big danger sign. The third one is having a loose boundaries. What exactly it is, like you become more people pleasing, you become more your partner pleasing. मैं specific होती हूँ. Codependent you can be with your parents also, with your children also, with your professional companions also. But here I'm talking about a loving relationship, or any relationship in which you are only two are involved. So in such relationships, you generally have very less boundaries, low boundaries. आप people pleasing ज़्यादा रहते हैं, आप partner pleasing ज़्यादा रहते हैं, आपको उनका ख्याल अपने से इतना ज़्यादा है that you tend to sacrifice your own needs and desires just to fulfill those or theirs, I should say. So that's a biggest, I guess, danger sign. अगर आप ये अक्सर करते हैं तो ये actually एक codependency symptom है. The next one is the control. कंट्रोल इसलिए बिकॉज सिंस आपकी खुद की बाउंड्रीज बहुत लूज हैं एंड यू टेंड टू गो टू एनी एक्सट्रीम बाउंड्री टू प्लीज़ योर पार्टनर, सो इन रिटर्न ऑल्सो यू एक्सपेक्ट द सेम. आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, यू बिकम सो ऑब्सेस्ड विद योर पार्टनर दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू लूज दैम एट एनी कॉस्ट, एंड unconsciously, subconsciously you try to control them also. Sometimes it works also, sometimes it doesn't. So controlling your partner to an extreme level, या उतना एक्सपेक्ट करना जितना आप उनके लिए करते हैं, is another symptom. Reactivity issue is another one biggest symptom. इसमें क्या है that since you do not have your own boundaries, since you do not feel that you are worthy enough, you do not feel that you are good enough to take your own decisions, so you start reacting very quickly and very easily on the other people's opinions. या तो आप उनको एकदम मान लेते हैं, या आप एकदम ही उनसे ऑफेंड हो जाते हैं. यू स्टार्ट डिफेंडिंग योर ओन सेल्फ. Either of the extreme situations, you do not want to analyze that whether that opinion which you are differing to can be a correct opinion or not. So you do not want to crossfire the questions. You only want to defend your opinion, or you want to mingle with that opinion. Why codependency occur? कोडिपेंडेंसी एक्चुअली कोई जेनेटिक या बायोलॉजिकल इलनेस नहीं है कि किसी वायरिंग के कनेक्शन या मिस कनेक्शन की वजह से यू हैव इट, बट इट इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, your childhood experiences. Most of the times if you have an abusive relationship with your parents especially, or if your parent had an abusive relationship, जो उसका impact आपके ऊपर आता है. And since you know that this is how your parent has dealt with your another parent, you absorbed it, and jab aap when you become an adult, that becomes a pattern of your life. So the very major reason is your childhood memories, your childhood traumas. जो आप सीखते हैं आप वही बन जाते हैं एक्चुअली बड़े होकर. Unconsciously you register those patterns in your life, that the only way to make a relationship work is to be very nice to the other person, is to accept him or her so wholeheartedly that even if he does something wrong to you,
it is okay, because that is your moral responsibility, to handle that relationship, to make that relationship work. ये बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ के साथ आप बड़े होते हैं, आप क्योंकि आप ये देख रहे हैं अपने आसपास, एंड इट यू एब्जॉर्ब दिस लिमिटिंग बिलीफ इन योर सेल्फ एंड you become a one later in your personal relationships also. Another few reasons could be no financial issues. Children, especially if you are a parent, if you have a children around, so one of the reasons to be in such toxic relationship is only and only the children, and the social stigma also, to an extent, because still in our society divorce or splitting up is taboo, is not considered something good, and you've been always questioned about it. तो उस डर से भी आप कोशिश करते हैं, and unsupportive family also, because some of the times if you go and complain to your family, they will come and tell you that it does happen. हर रिश्ते में तो थोड़ा बहुत ऐसे नोक झोंक होती ही रहती है, यू शुड अवॉइड, यू शुड बी अ बिगर पर्सन, यू शुड बी अ मैग्नानिमस पर्सन, एंड दैट्स हाउ नो यू हैव बीन asked to deal with it. So that's these are few of the reasons also for having a codependency trauma. क्योंकि को डिपेंडेंट पर्सन नो इट्स रिस्ट्रिक्ट्स इट्स वर्ल्ड टू द पार्टनर ओनली. तो रिकवरी के लिए आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर कॉन्शियस एफर्ट्स टू मीट योर फ्रेंड्स, योर सपोर्टिव फैमिली, योर अदर पीपल अराउंड whom यू कैन हैव अ ओपन कम्युनिकेशन विद. कुछ टाइम सिर्फ अपने लिए निकालिए, नॉट बीइंग विद योर पार्टनर. थोड़ा अपने लिए सोचिए. एवरी रिलेशनशिप इज़ नॉट टॉक्सिक और हार्मफुल कि आपको उसको छोड़कर ही जाना है. यू कैन मेक इट अ बेटर वन विद योर ओन एफर्ट्स primarily. I guess nobody else can work for you. You have to work for that relationship to make it a better one, in a healthier one, I should say. Because work तो आप शायद कर ही रहे हैं उस relationship में, being ना झेलोफाइंग ऑल दैट थिंग्स. तो हेल्दी बनाने के लिए आई गेस यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, तो ड्रॉ सम बाउंड्रीज, ओपन विद देम, एंड नो स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ ऑल्सो. पूरे दिन में एटलीस्ट इतना तो आप निकाल ही सकते हैं. जो हॉबी आप शायद छोड़ दिए हैं, जो पहले आप करते थे, जो अब आप नहीं करते हैं, ट्राई टू गेट ऑन टू दोज अगेन. म्यूज़िक हो, डांस हो, गॉसिप भी हो शायद विद योर फ्रेंड्स, एनीथिंग विच यू लाइक, पोएम राइटिंग, डायरी राइटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, जिसको आपने सिर्फ एक डेली रूटीन बना के रख लिया है, बट यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड with your heart and soul into it. Try to get it on it once again, to distract yourself from just thinking about how to please your partner. And very very important again is to seek help from others if you feel like that everything is not working here. Whatever you are trying for yourself or for your partner is not working, so don't be hesitant to go out to, call out for the help, because that is also very very essential actually. At some point of time you really need that too. So that's it, guys. This is about codependency, its signs and symptoms, and how to overcome them peacefully, happily, and to maintain a good relationship, to continue having a good relationship with your partner and your own self. That's very, very, very important, I guess. Self love is the key for no loving others also. And on this note, I end up this video. I hope you like this video, and if you do, please do like and subscribe my channel. It really does motivate me too. I always say this and I keep on saying this because that's genuinely from my heart. Till then, stay safe, stay indoors, and stay in touch. Bye bye.